Hey, so basically, wasn't interested in selling. If you watched my post market yesterday, I was looking for 18,200 to come, or look for sell only around 18,200 levels, which happened after 2 o'clock. Now I'm looking for a 1 hour close below 18,200, and then look for shorting opportunities. No volumes in Bank Nifty and Nifty. System trade 145 was basically 145 making new high. I looked for a sell below 145. 145 was not making a new high, so did not trigger. Now this is where I actually traded. Uh, so if you're watching my post market, I've mentioned that I usually don't trade volume if there are poor volume structures. I don't trade volume structures. Being an expiry, I wanted to. So what I did was this. Also, I've mentioned several times. If there is no volume, you go back to the pattern or structure where you see good volumes, which was on 2nd May. So good buying volume structures, and this was taken out yesterday with a gap down. So now if you look at today's 10 o'clock uh, support zone was basically 2nd May's low, and was waiting for 18 43,300 close above 43,300 to get a confirmation for a trade bullish trade. It was basically selling 43 anything below 43,300, and stop loss was this. So I did not really capture all of this. So I was not really expecting, frankly, that Bank Nifty will break 43,500, considering the OI which was at 43,500, and once it broke, it almost gave 200 points. So I exited once I had a system trade coming in which predicted a short if triggered. I exited my longs, and yeah, so this was a very easy structure. No system or anything required here. You see, go back to the day where you have volumes. You see that at 10 o'clock, around 10 o'clock, Bank Nifty is taking support at 2nd May's low, and then you wait for it to close above 300. Why 300? Because these are the candles where the next support comes. So that is the reason I wanted this to close above 300. So waited for that to happen, and I sold. For tomorrow's play, I'll probably, as I said, I'll wait for a close now below 18,200. I wanted this to visit and then decide. If there's a gap down, I will not be interested. I'll probably be interested only trading it around 18,200, because my stop loss will be a candle above 18,200, 1 hour candle above 18,200. So the risk becomes less. Nothing else. Thank you. तो बेसिकली कल मैंने ये बोला था कि यहाँ पे इस जोन में मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं देखूँगा. 18,200 के आसपास मैं शॉर्ट करने के लिए देखूँगा, और 18,200 आया, लेकिन वो 2 बजे के बाद आया और उसकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था. अब 18,200 के नीचे मैं कोई भी 1 आवर कैंडल क्लोज हो तो मैं शॉर्ट करने के लिए देखूँगा 18,200 लेवल्स के आसपास. इंट्राडे में अगर आप देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई वॉल्यूम्स नहीं आई. निफ्टी में जो सिस्टम ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ. ट्रेड बेसिकली ये था 145 अगर हाई बना रहा है तो मैं उसके नीचे सेल करूँगा. स्टॉप लॉस रहेगा डे हाई. अब बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन तब भी क्योंकि एक्सपायरी था इसलिए मुझे ट्रेड करना था, तो मैं उस दिन का रेफरेंस लेने चला गया जिस दिन वॉल्यूम्स आए थे, जो कि था 2nd में. अगर आप देखेंगे तो 10 o'clock को जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके एक अप मूव बनाया, वो बेसिकली 2nd में का लो था, और मैं वेट कर रहा था. अब दूसरा जो 2 इंटरेस्टिंग जोन्स हैं, मैं वेट कर रहा था उसको, वो आते हैं अराउंड 300 के लेवल्स के आसपास. तो मैं वेट कर रहा था एक बार बैंक निफ्टी उस लेवल्स के आसपास उसके ऊपर क्लोज हो, और फिर क्योंकि एक्सपायरी थी तो मेरे को 300 के नीचे मैं प्रीमियम्स कैप्चर कर सकता था पुट में. तो अब जैसे मैंने बोला कि 145 को सिस्टम ट्रेड आया था, जो कि मैं चैनल्स पे शेयर करता हूँ, उसमें बेसिकली एक शॉर्ट सेटअप बन सकता था अगर वो ट्रिगर होता तो. इसलिए मैंने 145 पे सब एग्जिट कर दिया, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इसको 500 तोड़ने का, तो ये मैं कैप्चर नहीं किया, पर चलता है. अब कल जैसे मैंने बोला, मैं वेट करूँगा 1 आवर क्लोज का, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा. थैंक यू.